tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saranam gacchāmi. Dhammaṃ saranam gacchāmi. Saṅghāṃ saranam gacchāmi. Pay my respects to the venerable Sangha and offer my blessings to all of the devotees gathered here this evening. मैं संघ को नमन करता हूँ और जो उपासक उपासिका हैं उनके लिए मंगल कामना करता हूँ. I first came to India when I was 17 years old, and I have visited India many times since. मैं जब पहली बार भारत आया तो मैं 17 साल का था और कई बार मैं भारत आ चुका हूँ. And from the moment I stepped foot in this country for the first time at Amritsar in 1975, I have received so much kindness and generosity. मैंने जब से इस देश में कदम रखा, पहली बार मैंने अमृतसर में अपना कदम रखा और तब से मुझे बहुत ही आदर और प्रेम मिला है. So it gives me great joy to be able to share the Dhamma with the people of India over the last few days. तो मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ दिनों से मैं यहाँ के लोगों को धम्म देशना दे पा रहा हूँ. So this is the dana for the bhikkhu, is the giving of Dhamma, is Dhamma dana. तो ये भिक्षुओं का दान है क्योंकि भिक्षु लोग धम्म दान देते हैं. And the Buddha said that Dhamma dana is the supreme kind of dana. और भगवान बुद्ध ने कहा है कि धम्म दान सबसे श्रेष्ठ दान है. Because it is giving truth, giving pointers and encouragement for people to change their lives. क्योंकि ये सच बताता है और लोगों को अपना जीवन बदलने का मार्ग बताता है. So if we had to summarize human life in one word, that would be quite a challenge. But I think probably the word that I would choose is change. तो संक्षिप्त में अगर मनुष्य जीवन के बारे में बताया जाए तो अगर एक शब्द में कहें तो ये परिवर्तन है. So we live in a world of change. Our body, our mind are in a constant state of change. तो हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हर चीज़ परिवर्तनशील है, हमारा शरीर, मन और परिस्थितियाँ. So change is the most common, the most basic of our experiences, the thing that we live with all through our life, and yet it is also the most profound thing. तो परिवर्तन ये हमारे जीवन का हिस्सा है और एक बहुत ही गहरा ये चीज़ हमें अनुभव में आता है. After the Buddha's first discourse, the Dhammacakkappavattana Sutta in Sarnath, Anya Kundanya became the first person to realize
the profound truth of the Dhamma and became a Sotapanna, a stream enterer. तो पहली बार भगवान बुद्ध ने जब सारनाथ में धम्मचक्कपवत्तन सुत्त दिया था, तो अन्य कौंडिन्य ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धम्म को अनुभव किया और वो श्रोतापन बने. So what was the profound knowledge that he gained from that discourse? तो ये ऐसा कौन सा गहरा ज्ञान है जो उन्होंने प्राप्त किया इस प्रवचन से? It is summarized so simply that he realized that whatever is of the nature to arise is of the nature to pass away. तो संक्षिप्त में बताएं तो उनका अनुभव ये था कि जो कोई उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है. So that first stage of liberation was realized through understanding the most common thing in our life, change. तो पहला जो कदम उन्होंने अनुभव किया वो एक आम बात है जिसको उन्होंने अनुभव किया, और वो है सब चीज़ परिवर्तनशील है. So spiritual life for us Buddhists is not searching for some special state of mind, but to understand all the normal states of mind, the normal and common features of our existence. तो बौद्धों के लिए ये कोई विशेष स्थिति प्राप्त करना ऐसा नहीं है, लेकिन जो आम बातें हैं उनको जानना, अनुभव करना ये ज़रूरी है. So if we look at the cultures of the world, we look at the personalities of individuals, we can see that so much is a reaction to change. तो हम देखते हैं कि जो विभिन्न संस्कृतियां हैं और व्यक्ति हैं, वो उनकी प्रतिक्रिया ये परिवर्तन के प्रति है. So some people, or many people, will look to the past and they say, oh, in the past it was so much better than today. The people were kinder and more honest and everything was so much better than today. We should not change anything. We should try to just keep all the old things. तो कुछ लोग सोचते हैं कि वर्तमान से अतीत बहुत अच्छा था, बहुत सुखमय था, तो वो वैसे ही रहना चाहिए था, वो बदलना नहीं चाहिए था. And then the other extreme, people say we need to throw out all the old things and just to bring in the new things. We must be modern and keep up with the latest trends, and the old things should be thrown away. और दूसरी अति ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो पुरानी जो भी चीज़ें हैं उसे निकाल फेंकना चाहिए और नई चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए, नई चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए. But the Buddhist middle path is to understand change, not to blindly react to it. तो बौद्धों का जो रास्ता है वो मध्यम मार्ग है, जो कि प्रतिक्रिया न करने का मार्ग है. And the change that we are most interested in is how we as human beings change. How do we abandon the unwholesome? How do we cultivate the wholesome? How do we purify our minds? तो हमारे अंदर जो परिवर्तन लाना है वो है कि जो हमारे अंदर विकार है उनको कैसे दूर करें और जो अच्छे चीज़ें हैं उन्हें अपने जीवन में कैसे उतारें. One of the main reasons why people all around the world are turning towards Buddhism today is because Buddhism has a technology
Buddhism has very clear, precise, systematic methods of creating positive change in human beings, in human families and human societies. तो जो बौद्ध धर्म के प्रति बहुत से लोग जो आकर्षित हो रहे हैं वो इसलिए क्योंकि बौद्ध धर्म में ऐसी विधि है जो मनुष्य में अच्छे गुण ला सके, अच्छा परिवर्तन ला सके. So most religious systems will tell us a good person is like this, a good person is like that. But when we ask, yes, we find this very inspiring, we would like to be that kind of person, but unfortunately, I am not. So what can I do to change from how I am today to how my religion tells me I should be? And this is the weak point of most religions and the strong point of Buddhism. So बहुत से धर्म ये बताते हैं कि अच्छा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, अच्छा व्यक्ति वैसा होना चाहिए. लेकिन जब हम पूछे कि वो अच्छा व्यक्ति वैसा व्यक्ति मैं होना चाहता हूँ तो उसका क्या तरीका है, तो दूसरे धर्मों के पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म में इसका जवाब है. So as we do not become fully Buddhist through our belief in the Buddhist teaching, we become fully Buddhist by applying these teaching to our life to transform our own heart and mind, to transform our families, to transform our communities. बौद्ध धर्म हम खाली विश्वास कर हम बौद्ध नहीं बन सकते. बौद्ध हम परिवर्तन लाकर, अच्छा परिवर्तन लाकर, अच्छा व्यवहार लाकर हम बौद्ध बन सकते हैं. So I have compared the teaching of the Eightfold Path to a technology, a spiritual technology. तो मैं आर्य अष्टांगिक मार्ग को एक विज्ञान, एक टेक्नोलॉजी समझता हूँ, एक आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी है. And this spiritual technology must be applied in harmony with the material technology. ये जो आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी है, ये आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी जो सांसारिक या भौतिक टेक्नोलॉजी है उसके साथ साथ इसका पालन करना चाहिए. But another way of talking about the teachings, or another analogy, is of medicine. तो और एक तरह से अगर इस चीज़ को हम उदाहरण देकर बताएं तो वो है एक दवाई. In fact, the Buddha was called the great physician or the great doctor. तो वास्तव में भगवान बुद्ध को भी एक बहुत अच्छा डॉक्टर, एक बहुत अच्छा वैद्य कहा जाता है. Because in giving us the Eightfold Path, he gave us the medicine to cure suffering. तो उन्होंने हमको जो आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया है, वो आर्य अष्टांगिक मार्ग देकर हमें एक दवाई दी है. But of course, there are some people who still take the medicine. It's like the bottle of medicine, and they put on the shrine, and they light candles and incense and bow to the bottle of medicine. तो कुछ लोग हैं इस दवाई को लेकर किसी विहार में जाकर देते हैं, या मोमबत्ती अगरबत्ती लगाते हैं, या उस दवाई की पूजा करते हैं. And there are other people who examine the
ingredients of the medicine, and they analyze the different names of the medicine and the different proportions of the medicine, and they have many arguments about the names of the constituents of the medicine on the medicine label. तो कुछ लोग हैं कि दवाई में क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी कितनी मात्रा में हैं, इन चीज़ों पर ज़्यादा बहस करते रहते हैं. So the Buddha's teachings are not just for worship, they're not just for study. They're like medicine, you have to take them, you have to eat them, the medicine. तो बौद्ध धर्म केवल पढ़ने के लिए नहीं है, केवल उसको जानने की बात नहीं है, बल्कि उसे अनुभव करने की बात है, यानी एक तरह से दवाई लेने वाली बात है. Now, if you have some infection and you go to see the doctor will give you the antibiotic, and the doctor will tell you, you must take the whole course of medicine. Don't stop when you start to feel better, because if you do, some of the bacteria is still inside you, maybe not completely dead, and then it will come back. And this time it will have a resistance to the antibiotic and be more difficult to cure. तो जब मान लो आपको कोई रोग हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक लेने के लिए कहते हैं, प्रतिरोधक जो शक्ति उत्पन्न करे. तो वो एंटीबायोटिक का लेने का कुछ दिन होते हैं, वो पूरा दिन, हफ्ते का या 2 हफ्ते का, वो पूरा लेना पड़ता है. अगर आप पूरा न ले, बीच में छोड़ दे, तो फिर वो जो अंदर जो कीटाणु है वो भी उस दवाई का फिर उनके ऊपर असर नहीं करता. And many Buddhists are like the patient who just takes a few of the pills until they feel better, but does not take the whole course of Buddha's teaching. तो बहुत से बौद्ध ऐसे हैं जो इस तरह से दवाई जिस तरह से थोड़े दिन लेते हैं, तो बौद्ध धर्म में खाली थोड़ा लेते हैं, पूरी तरह से इलाज होने तक वो उसे नहीं लेते या उसे अपने जीवन में नहीं उतारते. So they have some problem, they are feeling very sad or miserable, unhappy, and then they make merit, they offer dana, they start to meditate very enthusiastically, but then when their life gets better, they stop. तो कुछ लोग can you repeat that? So they become unhappy and तो जब लोग दुखी हो जाते हैं या उनके जीवन में कोई समस्या आती है, तो वो फिर दान करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थिति अच्छी हो जाए, अच्छा लगने लगे, तो फिर वो उसे बंद कर देते हैं. And so the defilements in their heart develop the resistance to the Dhamma and become even more difficult to abandon. तो उनके अंदर जो विकार है वो धम्म के प्रति एक प्रतिरोधक शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और फिर वो धम्म उनके ऊपर काम नहीं करता. My teacher used to teach the monks like this: when you are enthusiastic to practice the Dhamma, then you practice. And when you are lazy and you don't feel like practicing, then you practice. तो मेरे जो आचार्य है वो अपने शिष्यों को इस तरह से सिखाते थे कि जब तो आप बहुत ही उत्साहित हो तो आपको ये धम्म का आचरण करना चाहिए, और आप बहुत आलसी हो, हताश हो, तो भी आपको धम्म का आचरण करना चाहिए. So whether you feel enthusiastic or whether you feel lazy, you should look at it just like the farmer looks at the weather. Every day the farmer goes to his field. Some days it's so hot,
He doesn't want to go, but he goes. Some days it's very cold or it's raining, but he goes because he has to go. This is his livelihood. If he does not cultivate his fields, he will have no crop and no food for his family. तो आप अगर चाहे उत्साहित हो या हताश हो, निराश हो, आलसी हो, तो भी आपको धम्म के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर एक किसान, चाहे बहुत धूप हो या बारिश हो या मौसम कैसा भी हो, वो खेत में जाता है और काम करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जब तक वो काम नहीं करेगा उसे फल मिलने वाला नहीं है। So you should look upon the practice of Buddhist teaching, taking the Buddhist medicine or applying Buddhist technology in the same way. This is your most essential work as a human being. तो इसलिए आपको बौद्ध धर्म को भी इसी तरह से अपने जीवन में उतारना चाहिए, धारण करना चाहिए, इस बौद्ध धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। So the goal of the Buddhist teaching is sometimes expressed as the end of birth, the end of rebirth. तो बौद्ध धर्म का लक्ष्य इस तरह से बताया जाता है कि बौद्ध धर्म का लक्ष्य जो है वो जीवन का अंत करना। But we should not look at that teaching as only referring to after our physical death, but it means today, that our practice is not to be reborn as a greedy person today, not to be reborn as an angry person, not to be reborn as a jealous person, not to be reborn as a confused person. So we are practicing moment by moment not to allow these unwholesome mental qualities from arising. This means no rebirth. तो बौद्ध धर्म पुनर्जन्म का अंत करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये शरीर जब मर जाए तो फिर पुनर्जन्म नहीं लेना। यहाँ पर हर पल जो हमारे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे राग, द्वेष, मोह, अनेक प्रकार के जो विकार उत्पन्न होते हैं, उनका पुनर्जन्म न होना, उसका अंत करना ज़रूरी है। So the practice of the Eightfold Path, the medicine that the Buddha gave us, consists of dana and sila and bhavana. तो भगवान बुद्ध ने जो हमको ये आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया है, वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, दान, सील और भावना। So this is really a different way of talking about the Dreisikar of Sila, Samadhi, Panya. But here, Samadhi and Panya are given one name, is Bhavana, it's cultivation. And then for the lay Buddhists, we emphasize the dana. तो और एक तरीके से इसे सील, समाधि और पन्या भी कहते हैं। तो ये समाधि और पन्या को जोड़कर यहाँ पर भावना कहा जाता है। So bhavana, the cultivation of the heart, is not in fact something that we only do when we are sitting cross-legged with our eyes closed or walking up and down. तो भावना यानी हृदय को शुद्ध करना, और हृदय को शुद्ध करने का मतलब केवल बैठकर आलती पालती मार कर बैठकर ही ये काम किया नहीं जाता। Because in fact dana and sila are, we can say, are also bhavana. They are also a kind of cultivation. तो दान और सील, इसको भी हमें भावना समझना चाहिए, एक साधना समझनी चाहिए। For example, on one occasion, the Buddha said that macharya or stinginess, selfishness,
is a major hindrance to samadhi or jhana. एक जगह पर भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये जो मत्सर्य है, ये जो कंजूसी है, ये एक रुकावट है आगे बढ़ने के लिए. So every time you give, you are reducing the amount of macharya, of stinginess in your heart, and you are creating conditions for development of samadhi. तो हर बार जब आप दान देते हैं तो आप अपने अंदर जो कंजूसी है, जो मत्सर्य है, उसे दूर कर रहे हैं, और जब आप इसको दूर करते हैं तो समाधि में आगे बढ़ने लगते हैं. So in giving dana, we create warmth and friendship in the community in which we live. तो जब हम दान देते हैं तो हमारा दूसरों के साथ अच्छा संबंध बनता है, मित्रता बढ़ती है. And whenever we act in a good and kind and generous way, we create the inner treasure. और जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम अपने अंदर एक धन, एक प्रकार का धन हम प्राप्त करते हैं. So you can observe, you try to remember when you have acted in a good, kind way with no hope for any kind of reward. Now, no matter how long ago that occurred, when you remember that act of goodness, you feel joy in your heart. And this is the treasure that no one can steal from you. तो आपने कभी दान दिया होगा, वो भी बिना किसी उम्मीद किए, बिना उम्मीद के जब आपने दान दिया है, और ये चीज़ आप कई दिनों, कई साल के बाद जब याद करते हैं तो वो एक प्रकार की खुशी देता है, एक प्रकार का आनंद देता है. तो ये अंदर का, अपने हृदय का एक धन है. And if you recollect the good things you've done in the past in a systematic way, then the joy that arises is strong enough to become a meditation object for you. आप अतीत में जो भी अच्छे कार्य किए हैं उसको जब आप ध्यान से याद करते हैं तो वो भी अपने आप में एक ध्यान का विषय हो सकता है, और वो अंदर से एक खुशी उत्पन्न करता है. In Thailand, when someone is approaching death at the very end of their life and they have never developed a meditation practice, if we try to teach them some mindfulness of breathing or some vipassana technique, it's usually too much for them. But even if they have never meditated before, they have always done good things in their life. And so encouraging someone at the end of their life to remember their good deed and then to take that joy in goodness as their refuge is a very skillful way to help someone to leave this world with a wholesome, joyful mind. तो थाईलैंड में जब मान लो कोई मरणासन हो, मरने वाला हो, और उसने अगर ध्यान नहीं किया हो, तो अगर हम उनके पास जाकर कहें कि ध्यान करो, सती रखो, विपස්සना करो, तो ये उनके लिए संभव नहीं है. लेकिन हाँ, अगर हम उनसे कहें कि आपने जो अतीत में जो पुण्य किया है उसे याद करो, तो ये बड़ा आसान है, वो याद कर सकते हैं, और इस तरह से अंदर से एक उनमें खुशी उत्पन्न होती है, और इस खुशी को लेकर वो सुगति प्राप्त कर सकते हैं. But also, simply by recalling the kindness of others, we can also experience great joy, the mudita. और दूसरे ने जब हमें कुछ दान दिया है या हमारी मदद की है, उसको भी अगर हम याद करते हैं तो वो भी एक प्रकार का आनंद उत्पन्न करता है, जिसको हम मुदिता कहते हैं.
So there is so much that goes on in the world every day, and there are so many terrible things that go on in the world, and these are the things that we read about or listen to in the news, on our televisions and on our telephone screens. सो बहुत सी घटनाएं दुनिया में होती रहती है, दुर्घटनाएं होती रहती है, जिसे हम टीवी, न्यूज़, समाचार में सुनने और देखने को मिलता है. So we should not close our eyes to these things, of course, but I think it's too imbalanced, and that we should find some balance by opening our eyes and looking around us and observing and appreciating and rejoicing, anumotana, in all the small acts of goodness that take place every day in our world. तो इस तरह से ये सारी जो दुर्घटनाएं हो रही है या जो समाचार है, तो उसको नज़रअंदाज करना ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन जो जीवन में दूसरे जो छोटी छोटी घटनाएं हैं जिसमें अच्छे काम किए, अच्छी बातें हैं, उनके ऊपर भी हमें नज़र रखनी चाहिए. Last year, my mother passed away. But before that, at that point, she was 90 years old. But before that, in her later years, sometimes she would get rather depressed, and she felt, I don't know why I'm living. I'm just a burden on my children and grandchildren. पिछले साल मेरी माँ का देहांत हुआ. वो 90 साल की थी, और उसके पहले वो कभी कभी बहुत निराश हो जाती और वो सोचती कि मैं जीवन पर एक बोझ हूँ, मेरे बच्चों पर बोझ हूँ, ऐसा वो विचार करती थी. She felt as an old person, and this is perhaps especially true in the Western country, she felt her life had no meaning and no value. तो पाश्चात्य देशों में ये आम बात है कि बूढ़े लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में हमारे जीवन की कोई कीमत नहीं है, कोई महत्व नहीं है. So I told my mother, just do one good thing every day, one kind thing, one generous action, even just a very small thing. तो मैंने अपने माँ से कहा कि रोज़ कुछ एक अच्छा काम करो, छोटा सा क्यों ना हो, एक कोई ना कोई अच्छा काम किया करो. And if at the end of the day you can recall even one small act of kindness that you have performed, one good thing that you have done in that day, then that's been a good day. That's been a day with meaning and a day with value. और पूरे दिन में अगर आपने कोई एक भी छोटा सा भी क्यों ना हो एक अच्छा काम किया है, तो वो जो दिन है आपका सफल है, वो आपके लिए अच्छा दिन है. So I'm sharing this with you so that if you have elders, family members, parents, grandparents who are feeling that you can teach them this also. That's even the small act of goodness is a wonderful thing. And the world needs goodness. The world needs kindness. And we can contribute just a little bit to increase the amount of goodness in the world, increase the amount of kindness in the world. Then this is a wonderful thing, something to be proud of. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके घरों में भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको ये बात बताइए कि रोज़ छोटा सा क्यों ना हो एक ना एक अच्छा काम करना चाहिए. ये छोटे छोटे एक एक काम करने से ये जीवन में खुशियाँ लाता है, आनंद लाता है. और हमको अगर मानव समाज में सुख और आनंद लाना है, तो ये छोटे छोटे एक एक काम क्यों ना हो एक दिन में करना चाहिए. I'm just remembering an act of kindness in my own life I would like to tell you about. So in 1976, I was in Himachal Pradesh and looking for a quiet place to meditate.
From Shimla, I caught a bus to a town called Rampur, and from there I started to walk. And I was just walking through the countryside, looking for a quiet place to meditate. तो मैं एक बार अमृतसर से चलने लगा। मैं ढूंढ रहा था एक शांत जगह जहाँ पर मैं ध्यान कर सकूं। And one day I was walking in the late afternoon in a lonely place, and there was one small hut by the road. तो And मैं एक बार ऐसे ही ढूंढ रहा था, चल रहा था, तो दोपहर में मुझे एक छोटी झोपड़ी दिखाई दी। And there was one old man and one old lady outside their hut. एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा इंसान वहाँ बाहर उस झोपड़ी के बाहर खड़े थे। And so, of course, I could not speak their language, but they spoke the universal language. They say, "Have you eaten yet?" Yeah. तो उनकी भाषा मैं नहीं जानता, मैं भी उनकी भाषा नहीं जानता था, लेकिन वो इशारे से मुझे कह रहे थे क्या तुमने खाना खाया है। So I accepted their invitation and sat down and ate with them. तो मैंने उनका न्योता स्वीकार किया और उनके साथ बैठकर मैंने खाना खाया। And I could see they were so poor, and yet they were so happy to be able to share their small amount of food with me. तो मैंने देखा कि वो बहुत ही गरीब थे, और उस गरीबी में भी जो कुछ थोड़ा वो दिए, वो देकर वो बहुत खुश महसूस कर रहे थे। And then they said, it's getting dark, you cannot walk any further. फिर उन्होंने कहा कि अब बहुत अंधेरा हो चुका है और आप आगे नहीं जा सकते। Of course, I was not a monk at this point, but I did not want to stay in the house with the householder. Usually I would sleep under a tree. तो उस समय मैं बनते नहीं था, मैं भिक्षु नहीं था, लेकिन गृहस्थ होने के बावजूद भी मैं गृहस्थियों के घर में रहना नहीं चाहता था, मैं किसी झाड़ के नीचे रहता था। But they insisted, and they could speak one phrase of English, which I heard so many times in all my visits to India, is guest is God, guest is God. तो लेकिन उन्होंने मुझे ज़ोर दिया घर में रहने के लिए, और एक शब्द वो कहते थे जो भारत देश में आम तौर पर देखने को मिलता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, ऐसा वो कह रहे थे। So I accepted their invitation. तो मैंने उनका ये न्योता स्वीकार किया। And what I remember is their hut is just one room, just about this size, and had one charpoy, one rope bed. तो मैंने देखा कि उनका जो कमरा था बहुत छोटा था और एक बांस की खाट थी। And then in one corner, I think there were just some cloths, a little few pieces of cloth. और एक कोने में कुछ कपड़े रखे हुए थे। And they said, "You must sleep on the bed." और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको इस खटाई पर सोना है। And I said, "No, I'm very happy sleep on the floor." They said, "No, you cannot. You must sleep on the bed." तो मैंने कहा नहीं, मैं नीचे ज़मीन पे सो जाता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपको इस खटिया पर ही सोना है। So in the end, I slept on the bed, and these two old man, old lady slept on the floor just below the bed. तो आखिर मुझे जो है वो खटिया पर सोना पड़ा और ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी वो ज़मीन पर सो गए। So this took place almost 50 years ago, and it's still so strong memory in my mind. I don't have such a good memory these days. Get older, I forget so many things, but I don't usually forget kindness like this. तो ये बहुत पुरानी बात है, ये 50 साल पहले
हुई बात है, और लेकिन फिर भी आज भी मुझे वो याद है। आमतौर पर मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, लेकिन ये जो अच्छे कार्य कोई करता है तो वो मुझे याद रहता है। So the Buddha said, don't overlook the power of goodness and kindness and merit. He said it's like you have the big water jar and the water drop, 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 but before long the jar can become full. And similarly, just small acts of goodness and kindness, they accumulate. And then you have a whole big jar of pure water. तो अच्छे कार्यों को, पुण्य कार्यों को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जिस तरह से एक हांडी में बूंद बूंद से हम कहते हैं कि घाघर भरता है, तो इस तरह से छोटे छोटे अच्छे कार्यों से ये हमारा जीवन भी भर जाता है, आनंद से और सुख से। Sila is also a practice. It is a kind of bhavana. It is an education or a training of your conduct. तो सीला ये भी एक प्रकार की भावना है, एक प्रकार की साधना है। To be able to keep precepts in the correct way, we must first of all have the wisdom to understand why each precept is important to our life. What is the suffering? What are the problems that arise from not keeping each of the 5 precepts? What are the benefits of keeping each of the 5 precepts? Only when you have this right view and clear understanding of the value of the precepts can you keep the precepts well. तो इन शीलों का अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए, इसके महत्व को जानना चाहिए कि एक एक शील का क्या महत्व है। इसको जानने के लिए प्रज्ञा चाहिए, तो प्रज्ञा से एक एक शील का क्या महत्व है ये जानने से आप उस पर अमल कर सकते हैं। So we can also see the role of panya, wisdom, in the Buddha's teaching that if we keep each of the 5 precepts without breaking them, that does not mean our sila is pure. Because if we keep the pure sila, but then we think we are better than someone who does not keep the sila, then our sila becomes impure. तो अगर आप पांचों भी शील भी अच्छी तरह से आप पालन कर रहे हैं, लेकिन इन 5 शीलों के कारण आप अहंकार करने लगे और दूसरों के समझे जो शील का पालन नहीं करता उसको नीच नज़र से देखें, तो वो शील पूरा नहीं होता। So sometimes, people say, oh, the precept, I will not do this, I will not do this, I will not do this, and it's like you are giving up your freedom. तो कभी कभी ये शील में हम कहते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी आज़ादी खो रहे हैं। But often what you don't do is as important a part of the creativity as what you do. And for example, if you are writing, the editing where you take out the unnecessary part is important part of writing a book or writing a paper. And when you are drawing, making a painting, what you leave out is as important as what you put in. So in the creative activity, what you don't do is as important as what you do. तो क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये एक रचनात्मक चीज़ है। जिस तरह से दूसरे कार्यों में भी, जैसे आप कोई कला करते हैं, कोई तस्वीर उतारते हैं, तो उसमें क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, तो हर कार्यों में
ये दोनों चीज़ें रहती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये एक रचनात्मक चीज़ें हैं. So, on the positive, creative aspect, we can say that keeping precepts enables us to give. The most important thing that we all need as a basis for happiness in life, and that is sense of safety. When you give, when you keep 5 precepts, you are giving the gift of safety to all those around you. तो शील का जो सकारात्मक पक्ष है वो ये है कि जब आप शील का पालन करते हैं तो लोगों को जो है अभय दान करते हैं, उनको एक सुरक्षा प्रदान करते हैं. There is no happiness in family life without trust between husband and wife and parents and children. And trust comes from the precepts. So we give, by keeping precepts, we give the gift of safety and we create the conditions for trust. तो परिवार में खुशी लाने के लिए एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना ज़रूरी है, और ये विश्वास तभी हो सकता है जब हम शील का पालन करें. जो शील का पालन करते हैं तभी एक दूसरे के ऊपर विश्वास होता है, वरना विश्वास नहीं रहता. So for many people who take up meditation, they often find there's a big gap between what happens when they close their eyes and meditate and what happens in daily life. And some people get very frustrated with their families and their friends, and then they say, "Oh, I just fed up with. I just want to go back and do another course, or I want to." So their answer to the lack of peace in daily life is to go on another meditation course. तो ध्यान करते समय एक प्रकार की अनुभव होता है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अलग अनुभव होता है. और फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ दुर्घटना घटती है, कुछ अनहोनी घटती है, तो फिर लोग कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत तंग आ गया, मैं बहुत बेजार हूँ, तो मुझे फिर से ध्यान करने जाना चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं. In fact, in the meditation retreat or the period of meditation, we should be learning the life skill that can then be applied in daily life. तो वास्तव में देखा जाए तो ध्यान करते समय हमें वो कौशल्य सीखना चाहिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उसे अमल में ला सकें. So the most important quality, we may say, is mindfulness. तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ध्यान में वो है सजग रहना, सती. We need to have the constant mindfulness throughout the day. तो निरंतर सजगता रहनी चाहिए पूरे दिन में. But the object of mindfulness in daily life must be adapted to the situation. तो ध्यान का जो विषय है वो परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए. So if you are obviously, if you are driving a car, you don't want to go into samadhi. It's dangerous to yourself and everyone else. जैसे उदाहरण के तौर पर जब आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो तब आप समाधि में जाना नहीं चाहेंगे, वरना वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है. So if you have a busy life, what can be your object of mindfulness? तो अगर आपका व्यस्त जीवन है तो आपके ध्यान का विषय क्या हो सकता है? And the answer is, most basic object of mindfulness in daily life are the 5 precepts. और उसका सीधा सीधा जवाब है कि वो है पंचशील. If you are in a meeting
then the object of recollection is that you will not tell a lie in your speech. तो अगर मान लो आप किसी मीटिंग में हैं तो आप हमेशा ये याद रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगा. So one of the questions that comes up a lot is, well, what about white lies? White lies meaning you say something untrue not for some personal advantage, but because you are afraid if you tell the truth, you will make that person unhappy. तो अक्सर एक प्रश्न उठता है कि सफ़ेद झूठ का क्या. तो सफ़ेद झूठ यानी आप झूठ तो बोलना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप सच बोल दे तो लोगों को हानि होगी, ऐसा सोचकर आप झूठ बोलते हैं. तो ये जो सफ़ेद झूठ है तो इसका क्या, ऐसा भी एक प्रश्न उत्पन्न होता है. Many people will say, surely that is not wrong, it is compassionate. तो बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ वो गलत नहीं है, ये तो उनकी करुणा है. But the problem is that kamma is intention. So if you have the intention to say something untrue, this is the bad kamma that you create. But it will be the intensity of the kamma, the weight of the kamma will be affected by the reason that you spoke a lie, but it does not affect the existence of the kamma which is created. तो ये जो कर्म है वो आपकी चित्त की चेतना के अनुसार बनता है. तो आपकी चित्त की चेतना अगर झूठ बोलने की है तो उसके अनुसार ही आपका कर्म बनता है. Also, defilements are very tricky. It means that if you decide, oh, I won't tell a lie, I will only tell a lie, I only tell the white lie. Then why tell a white lie? Because I don't want to make somebody unhappy. If somebody says, I had my hair cut, does it look nice? Or I just cooked this, does it taste good? Or it can be anything. But the point is that when we decide under certain circumstance, I will tell a lie. It's like the little hole in the dam. Then that hole gets bigger and bigger and bigger. You start to have more and more reasons why you will tell a lie. And they all seem very rational at the time. तो इस सफ़ेद झूठ का कुछ लोग समर्थन करते हैं कि भाई इसके कुछ अच्छा भी होता है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए सफ़ेद झूठ जो है, जो बांध है उसमें एक छोटी सी छेद की तरह है और वो नुकसानदायक है. So in this situation, telling a lie is very easy. There is no training, there is no bhavana. तो झूठ बोलना बड़ा आसान है क्योंकि इसमें कोई भावना नहीं है, कोई साधना नहीं है. Telling the truth very bluntly and not caring for the other person's feelings, that's also easy to do. और सच भी बोलना दूसरों की भावनाओं को न देखते हुए, ये भी आसान है. But the bhavana and that can occur in daily life is we make our wisdom work. How can I, one, tell the truth, two, not hurt that person's feelings? So this is a challenge. It's easy to lie, easy to say harmful things, difficult to have skill in speech. तो सच भी बोलना और हानि भी न पहुंचाना ये एक कला है, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, ये कुशलता पर आधारित है. Just now I said that keeping the 5 precepts creates trust. Now if you tell only white lie, then it means to your view this was
a kind thing to do. But for other people, maybe they don't see it the same way. Their conclusion is this person will lie sometimes for certain reasons. And because that thought is there, then you cannot help but think, well, if they will lie about this, maybe they will lie about that. And the trust is destroyed. So by keeping this precept, this is the trust that when somebody says something, you know they're telling the truth. You don't have to think, is this the truth or is it a white lie? You know, it's only the truth. तो शील जो है एक विश्वास उत्पन्न करता है। अगर मान लो आप सफ़ेद झूठ बोलेंगे और कहेंगे कि नहीं मैं दया करके बोल रहा हूँ, कहीं उसको हानि ना हो, तो ठीक है, आप अपनी नज़र से देखते हैं कि आप उसको बचाने के लिए या दया करके बोल रहे हैं, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसे तो पता चल जाएगा अरे ये झूठ बोल रहा है। तो अगर ये आज सफ़ेद झूठ बोल रहा है तो कल को और वो और भी दूसरा झूठ भी बोल सकता है। इस तरह से उसका विश्वास टूट जाता है। तो इसलिए सफ़ेद झूठ हो या जो भी झूठ हो, झूठ बोलने से लोगों का विश्वास टूट जाता है। इसलिए शील का पालन करना ज़रूरी है ताकि लोगों में विश्वास बना रहे। So my teacher, he will often say, if you look after the precepts will look after you. तो अक्सर मेरे आचार्य कहते थे कि अगर तुम शील की देखभाल करोगे तो शील तुम्हारी देखभाल करेगा। So if you are practicing mindfulness in daily life with remembering these precepts, you are not going to create the bad karma, serious bad karma. तो अगर आप सजगता का अभ्यास करेंगे और ख़ास करके ये पंचशील की सजगता का अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप कभी भी दुष्कर्म नहीं करेंगे। Now I have an analogy. Let's suppose that somebody was very confident in their ability to walk in a straight line. तो मेरे पास एक अच्छा उदाहरण है कि मान लो किसी में बहुत अच्छी काबिलियत है कि वो एक सीधे लकीर पर चल सके। And so let's say they accept a challenge and they go out into the desert where there are no signs and indication of whether or not you are walking straight or in circle. तो मान लो अगर वो उनको जंगल में ले जाए जहाँ पर कोई भी साइंस नहीं है, तो वो सीधे जा रहे हैं या सर्कल में जा रहे हैं ये पता नहीं चलता। So it's also very, very cloudy, so you cannot see the sun also. और बहुत से बादल भी छाए हुए हैं और सूरज भी दिखाई नहीं देता। Okay, so this person, he walked from the morning to the evening in the northerly direction. तो मान लो ये व्यक्ति सुबह से शाम तक उत्तर दिशा में चलता है। And when he's asked, are you confident you walked in a straight direction? He said, yes, absolutely. और उससे पूछे कि आप श्योर हैं कि आप सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, तो वो कहते हैं हाँ। And then when the officials and the scientists, they check, it is true, he walked so straight without any help at all in the flat area. He's only 1 degree off straight after 8 hours of walking. It's incredible. तो अगर किसी वैज्ञानिक से या जो विशेषज्ञ हैं उनसे पूछे कि क्या ये सच कह रहा है, तो वो भी कहते हैं हाँ ये एकदम से सीधा चल रहा है, खाली 1 डिग्री का फ़र्क हो सकता है। And so the second day, he continues and he walks so straight. And 8 hours, he's only 1 degree off the straight line. और फिर दूसरे दिन उसी दिशा में चलता है और 1 दिन के बाद फिर खाली 1 डिग्री उसका और बदल जाता है। So after 90 days, how far is he away from the straight line?
तो 90 दिन के बाद वो अपने सीधे रास्ते से कितनी दूर हो गया? 90 degrees. 90 डिग्री दूर हो गया। And after 180 degrees, 80 days is 180 degrees. और 180 दिन के बाद 180 डिग्री दूर हो गया। Now he is absolutely confident. He is walking in the northerly direction. Subjectively, he is very confident. और बड़े ही वो आत्मविश्वास के साथ चल रहा है कि मैं एकदम सीधे रास्ते पे चल रहा हूँ, सीधी लकीर पे चल रहा हूँ। But in fact, of course, after 180 days, he's walking in southerly direction. लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो 180 डिग्री दूर हो गया, यानी वो विपरीत दिशा में चल रहा है। So why I'm telling you this is because I want to share how difficult it is to recognize when we make mistakes, when we deviate from the true path of Dhamma. तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कितना कठिन है स्वीकार करना है जब हम सही मार्ग से भटक जाते हैं। So this is why we need the daily meditation practice and the precepts in daily life. These means that we are constantly coming back to the straight path again and again. So in a day we do not deviate even 1 degree. तो इसलिए रोज ध्यान करना और शीलों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जब रोज इसका पालन करते हैं तो जो एक एक डिग्री हम भटक जाते हैं वो फिर वापस सही रास्ते पे आ जाते हैं। The meditation practice in itself is so important because we create the external conditions that are most helpful for looking at our mind, and then we can put our own mind under the microscope, and things that we cannot see with our normal eye, we can see in the microscope. Things that are very difficult to see in daily life, we can see in the meditation. We can learn about all the things that stop us from experiencing peace from experiencing peace in our life. तो ध्यान रोज करना ज़रूरी है। तो ध्यान करना यानी जैसे एक माइक्रोस्कोप के नीचे डालकर किसी चीज़ का देखना, तो इतनी गहराई से इतनी छोटी छोटी बातों का निरीक्षण हम कर पाते हैं, इसलिए ध्यान बहुत ही ज़रूरी है। So many people, if you were to ask them, would you like more peace in your life? And they would say, yes, of course. But if we then look at their behavior and their conduct, can see they want peace, but they also want all the unpeaceful things in their life. तो अगर आप किसी से पूछे कि आपको शांति चाहिए, तो कहते हैं हाँ ज़रूर चाहिए, लेकिन जिस तरह से उसका व्यवहार है वो शांति के विपरीत है। वो एक तरफ शांति भी चाहता है और शांति के विपरीत व्यवहार भी करता है। So it's like if you want to go up in a building, you want to go to the second floor, you have to leave the first floor. You say, oh, I want to go to the second floor so much, but yet you won't go up the stairs. You're happy with the first floor. तो अगर मान लो जैसे आपको दूसरे मंजिल पर जाना है तो आपको नीचे मंजिल छोड़ना पड़ता है। अगर आप नीचे मंजिल से संतुष्ट है तो फिर ऊपर मंजिल नहीं जा पाएंगे। So many people start to meditate and then they get discouraged and they say, oh, I'm not very good at this. I have so much thinking in my mind, or I get so sleepy. I'm not very good meditator. तो कुछ लोग ध्यान करके बड़े हताश हो जाते हैं कि नहीं ये अब मुझसे नहीं होगा, इतना आलस है, इतने विचार हैं, नहीं ये मुझसे नहीं होगा, ऐसा कहकर वो हताश हो जाते हैं। But this is the wrong understanding, because the way to peace is to understand the nature of all the unpeaceful mental states,
how they arise, what feeds them, how to let go of them. This is the life skill. We're looking at what happens when we get bored, for instance. Now, in meditation, most people will experience boredom. And then they have the reaction. Maybe they just have some fantasy or some memory as escape from boredom. So this is important thing to understand. Or when my mind is bored, it tends to run away into imagination. तो ध्यान करते वक्त अक्सर लोगों में ये बोर्डम आता है, तो वो बोर्डम के कारण उनको हताश या निराश हो जाते हैं. Or some people, when they have some difficulty, they want very much to have some results from meditation, and then it's slower than they thought. They become frustrated, and then the mind starts become negative and starting to think angry and negative thinking about the place they live in or the people around them or even themselves. और कुछ लोग जब ध्यान करते हैं तो कुछ उम्मीद रखते हैं, और जब वो उम्मीद नहीं मिलती, उम्मीद के अनुसार नहीं होता या वो प्राप्त नहीं होता, तो भी वो हताश और निराश हो जाते हैं. Another big problem is that once the initial agitation of the mind starts to diminish, becomes less, become relaxed, and then take too much pleasure in the relaxation, and the mindfulness disappears and they become sleepy. जब लोग ध्यान को यानी एकदम शीतलीकरण के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर बहुत ही शांत और शीतलीकरण हो गए तो वो आलस भी ला सकता है. So in the meditation, whatever the technique you are applying, it is really the practice of Samma Vayama, the 4 right efforts. You are learning the skill of how to protect the mind and not allow the negative, the defilements or the hindrances from coming into the mind. You are learning the skill, the ability to let go of the hindrances that have arisen. You are learning how to bring into the mind the qualities of mindfulness and sampajanya and patience and contentment. And you're learning how to take care of those virtues and develop them further. तो जो सम्मा वायाम है उसका अभ्यास करना चाहिए, जिसमें हम बुरे विचारों को आने नहीं देते, और जो बुरे विचार उत्पन्न नहीं हुए उसको उत्पन्न नहीं होने देते, जो अच्छे विचार है उसको रहने देते हैं, और जो अच्छे विचार ऑलरेडी है नहीं है उसे आने देते हैं, और जो अच्छे विचार ऑलरेडी है उसको और बढ़ाते हैं. इस तरह से अच्छी चीज़ों को बढ़ाना है और जो गलत चीज़ है उसे दूर करना है. So if you practice in this way, you develop skill of looking after your mind. And that skill you can then apply in your daily life. And when you do this, your mind, it's a little bit like the mother and the small child. So the mother, she's working, maybe she's cleaning or she's cooking or she's working online on her computer or whatever. And even though she's not, her eyes not on her child all the time, she knows. This is the mother. She knows exactly. Is the child okay? Where is the child? Is it happy? Is it in danger? This is the instinct of the mother for the welfare of the child, even while she is doing other things, even she's on the telephone or whatever. And this is the same as you develop. Your mind is like this child. You're always aware. Is the mind in the good, wholesome state, unwholesome state? Is it in danger? Is it okay? Even when you're doing the other things. And this is what we need to develop. तो ध्यान एक कला है अपने मन को देखने का, कि कैसे उसके बुरे विचार ना आए,
अच्छे विचार आएँ। तो उदाहरण के तौर पे जैसे माँ अपने बच्चे के ऊपर ख्याल रखती है, भले ही वो बच्चे की तरफ देखती नहीं, अपने काम करते रहती है, उसकी नज़र भी बच्चे की तरफ नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरफ से उसका मन उस बच्चे की तरफ रहता है कि बच्चा सुरक्षित है या नहीं, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जिस तरह से ख्याल रखते हैं, उसी तरह से हम दुनिया में कई कार्य करते हो बाहरी के बाहर दुनिया में, लेकिन फिर भी एक नज़र मन पे रहना चाहिए कि मेरे मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। उसे अगर गलत है तो उत्पन्न नहीं होने देना, अगर अच्छे हैं तो उसे बनाए रखना और उसको बढ़ावा देना। So you become very observant, and you can see that when there is some trigger, some impact through the eye and the ear and the nose, then often the mind will just follow that old habit, and this would lead to the defilement and suffering. But when you have the sharp mindfulness, you recognize this is a thought that will lead to worry. This is a thought that will lead to sadness. This is a thought that will lead to jealousy. And then you can just let it go very simply because you catch it very early. तो इंद्रियों के द्वारा कई विषय संपर्क में आते हैं और आप लोग स्वाभाविक रूप से उसके पीछे चले जाते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, इस तरह से विकार उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर आप सजग रहें, यानी शुरुआत से विकार उत्पन्न होने के शुरुआती से ही अगर आप सजग रहें तो आप उस पर काबू पा सकते हैं। So before we meditate, everything is me and mine. I said, I'm happy today, or I'm sad today, or I feel depressed today. It's all me. It's all I. But as you understand the mind more clearly, you see all the things in your mind more clearly, then there's a change. You think, oh yes, this mental state has arisen in my mind. That mental state has arisen in my mind. You are not making me. You are not making mine in the same way that you used to. तो आमतौर पर हम लोग ऐसा सोचते कि मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं निराश हूँ, तो ये मैं की जो विचार है ये ज़्यादा दुख उत्पन्न करती है। लेकिन अगर आप सजग हैं तो अगर आप निरीक्षण करेंगे ये, तो धीरे धीरे ये मैं मेरे का भाव जब जाएगा तो आपको सुख अनुभव होगा। And this is the path that will eventually lead to the very same, very simple but very profound insight of Anya Kundanya in the Deer Park, in Sarnath, after listening to the Dhammacakkappavattana Sutta. Whatever is of the nature to arise is of the nature to pass away. तो इस तरह से मन में जो भी विचार आते हैं तो उसको प्रति चिपकाव या द्वेष नहीं होना चाहिए। ये जानकारी रहनी चाहिए कि ये सब अनित्य है, जो उभरा है वो चला जाएगा। इस तरह की साधना होनी चाहिए, तब आदमी को दुख महसूस नहीं होता। तो धम्मचक्कपवत्तन में जो अन्य कौंडिन्य को बात समझ में आई, वो यही बात समझ में आई कि जो कोई भी चीज़ उत्पन्न होती है वो नष्ट भी हो जाती है। So I would like to offer you these reflections on the Dhamma, offer this Dhammadana to all of you this evening. Thank you for your attention and patience, and special thank you to Venerable Rakita, who's done such another wonderful job of translation. Thank you. तो इस धम्म को आप लोग इसके ऊपर जो मैंने आज धम्मदान दिया, आप लोग इसके ऊपर चिंतन मनन करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ और आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद।